कि हमने 20 तक तो कर दिए थे कॉन्फ़िगरेशन, है ना, आपने भी लिख दी थी। अब देखो 21 जो है वो क्या होता है, स्कैंडियम। और स्कैंडियम जो है दैट इज आर्गन 4s2 and 3d1। 22 it is titanium, it is argon 4s2 3d2। just write down the electronic configuration of 3d series, जिसमें 3d शेल सब शेल जो है फिल होता है उसको बोलते हैं 3d सीरीज, ठीक है ना। फिर 23 it is vanadium, so it is argon 4s2 3d3, right? So 24 it is expected to be argon 4s2 3d4, but actually surprisingly it is exceptional, it becomes 4s1 3d5। क्यों होता है ये, that I will let you know after some time, ठीक है। 25 manganese, it is argon 4s2 3d5। 26 iron, it is 4 argon 4s2 3d6। 27 cobalt, it is argon 4s2 3d7। 28 is nickel, it is argon 4s2 3d8। 29 is copper, it is argon 4s1 3d10। as per configuration it should be 4s2 3d9, but it is 4s1 and 3d10। 30 it is zinc, it is argon 4s2 3d10। so देखो these are exceptional electronic configuration। this is also exceptional electronic configuration। so because of this exceptional electronic configuration, this is 4s1 3d5 4s1 3d10। ये दो क्रोमियम और कॉपर, ये एक्सेप्शन क्यों है, अपने 11th में आप 30 तक लर्न करोगे, इट इज इनफ फॉर यू, ठीक है। तो बट ये जो दो है ये एक्सेप्शन क्यों है ये हम करेंगे अभी। कॉन्फ़िगरेशन बाकी समझ में आ गई, क्रोमियम और कॉपर को छोड़ के बाकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल वंस एक्सेप्शनल जो होते हैं उन्हीं को लोग याद रखते हैं ज्यादा, ठीक है। तो क्रोमियम और कॉपर को याद करते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि वाई क्रोमियम एंड कॉपर हैज एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। देखो वैसे कायदे से क्या होना चाहिए, 4s2 3d4, और ये कैसा होना चाहिए 4s2 3d9, 4s2 3d4, और ये होना चाहिए 4s2 3d9। बट इंस्टेड ऑफ दिस इट इज 4s1 3d5, इट इज 4s1 3d10। तो व्हाई इज इट सो, दैट वी विल डिस्कस नाउ, ओके। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाई क्रोमियम एंड कॉपर हैज एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
तो फर्स्ट रीजन इज exactly half filled and fully filled electronic configurations have extra stability. Exactly half-filled and fully filled electronic configurations have extra stability. Exactly half-filled D की बात करें तो D5 is exactly half-filled and D10 is fully filled. क्योंकि D जो है ऑर्बिटल उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 10, तो उसका एग्जैक्ट हाफ कितना हुआ 5, तो D5 और D10 जो है इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है. अगर इसके आगे भी Y लगा दे, Y इसकी एक्सप्लेनेशन ये है ना, बट अगर दोनों में Y लग जाए, क्यों ऐसा कि एग्जैक्टली हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों होती है, तो उसका मैं आंसर आपको बता रहा हूं. तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो पहले ये लिखोगे, फिर अगर ये आता है तो यहां से स्टार्ट करोगे. ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर यहां से स्टार्ट हो जाता है. ठीक है ना, और अगर यही क्वेश्चन होता है तो यहां से स्टार्ट होता है. ठीक है, तो ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की होती है. इट इज ड्यू टू टू फैक्टर्स. कौन कौन से फैक्टर है वो? सिमेट्री एंड exchange energy. These are two factors which decide the extra stability of D5 and D10. So let us discuss that. तो फर्स्ट फैक्टर बात करते हैं सिमेट्री. Symmetry leads to stability. Visible? Yes. So symmetry leads to stability. So let us compare D4. See, in D4, you know, D subshell has 5 orbitals. So just use Hund's rule. क्या बोलता है Hund's rule? कि electron pairing does not take place until each orbital is singly occupied of the same subshell. So see, in D4, see 1, 2, 3, 4. One orbital is vacant. 4 has one electron with parallel spin, and 1 is empty. But D5, all the orbitals have one electron each with parallel spin. So same is the case with D9 and D10. D9, D10. D9, 1, 2, 3, 4, 5. Each orbital has is singly filled with parallel spin. Now pairing takes place. 9, but here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
So out of D5 and D4, which has symmetrical distribution of electrons? D5 has D5 and D10. क्या लिखते हैं? D5 has more symmetrical distribution of electrons than that of D4, right? Same, D10 has more symmetrical distribution of electrons than that of D9, right? So that means D5 and D10 are more symmetrical, so they are more stable. So first reason is because D5 and D10 are more symmetrical, therefore more stable. So first reason is that. Okay, why it is not D4 but it is D5? Why one electron shift from 4s to 3d? Same here, D9 is less symmetrical, D10 is more symmetrical, because all have 2 electrons. But here 4 orbitals have 2 electrons, one electron has one orbital has only single electron. So this is more symmetrical than this is more symmetrical than D4. Done? So symmetry leads to stability. Now second reason. Second is exchange energy. Now say D4, D5. D5 and D4. So what about exchange energy? Actually, electrons with same spin can exchange their positions. Electrons with same spin, with parallel spin, up spin can exchange their position. Electrons with same spin can exchange their positions, and for every exchange, energy is released. That is called exchange energy. क्या बोलते हैं उसको? Exchange energy. So more are the number of exchanges more is the exchange energy, and greater is the stability of electronic arrangement. समझिए?
कि इलेक्ट्रॉन जिनकी पैरेलल स्पिन होती है दे कैन एक्सचेंज देयर पोजीशन। इसकी जगह ये आ जाएगा, इसकी जगह ये। जैसे 4 लोग चेयर पे बैठे हैं, एक चेयर दूसरी चेयर दूसरा इस चेयर पे आ जाएगा, वो उस चेयर पे चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज। और जैसे वो एक्सचेंज करेंगे तो उससे क्या होगी, एनर्जी रिलीज, जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, अब जितने ज्यादा एक्सचेंजेस होंगे उतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, तो इसका मतलब उसकी एनर्जी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जितनी हायर एनर्जी होती है उतनी कम स्टेबल होती है कॉन्फ़िगरेशन, याद रखना है। जैसे इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से दूर जाएगा उतना ज्यादा एनर्जी का हो जाएगा, उतना मोर एनर्जेटिक हो जाएगा, है ना, लेस स्टेबल हो जाएगा, जल्दी निकालना उसको इजी हो जाएगा ना, उसको समझ गए। सेम इज द केस हियर कि जिसकी एक्सचेंज एनर्जी, जिसके एक्सचेंजेस ज्यादा होंगे वो उतनी ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी। रिपीट करता हूं, ये हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन जिनकी स्पिन क्या हो, पैरेलल, सेम स्पिन, अप स्पिन अप स्पिन, ये एक दूसरे से अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, और ये जो एक्सचेंजेस होते हैं उससे एनर्जी रिलीज होती है। तो जितने ज्यादा एक्सचेंजेस होंगे उतने ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी, तो उससे क्या आती है, स्टेबिलिटी। एनर्जी कम हो जाएगी उसकी तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब मैं बताता हूं कैसे। देखो इसमें, देखो ये इलेक्ट्रॉन इससे एक्सचेंज कर सकता है, इससे भी एक्सचेंज कर सकता है, इससे भी एक्सचेंज कर सकता है, मतलब 3 हुए पहले केस में। दूसरा इलेक्ट्रॉन, बोलो, दूसरा इलेक्ट्रॉन इससे भी एक्सचेंज कर सकता है, इससे भी कर सकता है, तो 2 हुए, क्योंकि इसके साथ इसका तो एक्सचेंज काउंट हो गया। थर्ड इलेक्ट्रॉन कैन एक्सचेंज विद दिस वन, ये ऐसे आएगा ना, अलग से बनाओ 4 बार। देखो ये 1 2 3 4, ठीक है। One, two, three, four. 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन है ना। देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैन एक्सचेंज विद अदर 3, तो 3 हो गए इसके। सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए 2 एक्सचेंजेस, और थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए 1 एक्सचेंज, तो 3 + 2 + 1, 6 एक्सचेंजेस हुए। बट 5 के लिए क्या होगा, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, D5 है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैन एक्सचेंज विद 4, राइट, यहां लिख देता हूं, ठीक है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन कैन एक्सचेंज विद 3, third electron can exchange with 2, fourth electron can exchange with 1, means it has 10 exchanges. So किसकी exchange energy ज्यादा होगी, D5 की। D5 has 10 exchanges, D4 has 6 exchanges. That's why exchange energy of D5 is more than D4. So D5 is more stable than D4. So D5 has more number of exchanges than D4. That's why D5 has more exchange energy than D4. Let us try for D9 and D10. See, I'm not writing for that, but see, D5 के लिए कितने exchanges थे, 10, D4 के लिए 6, ओके। तो
तो देखो D9 जो है, could you figure out how many exchanges D9 has? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. D10 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. D9 has how many exchanges? Could you figure out? Yes, anybody? Very good. 16 number. Wow, great, Siddharth. Say, in D9 there are 5 with parallel spin and 5 electrons with parallel spin, 4 electrons with anti-parallel spin. So 5 electrons with parallel spin can exchange with each other. So they have 10 exchanges. 4 electrons with anti-parallel spin can exchange with each other. So they have 6, to total 16. Means D9 has 16 exchanges. But what about D10? D10 has 5 electrons with parallel spin, 5 electrons with anti-parallel. So total 20 exchanges for D10. For D9 16, for D10 20. So D9 has more number of exchanges, higher exchange energy. So D10 is more stable than D9. D10 is more stable than D9. That's it. Got it? So that's why D10 and D9, out of these D10 is more stable. Out of D5 and D4, D5 is more stable and they have extra stability because of higher symmetry, and higher exchange energy. That's why exactly half filled and fully filled configurations have extra stability, and that's the case of chromium and copper. एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, मैंने डिटेल में आपको बता दिया है. नाउ let us take example of ions. Electronic configuration of ions. So for cations, electron is removed from, keep in mind, from higher shell number. Keep in mind this thing. From higher shell number. You know this is NLX. N is shell number. L is subshell, and X is number of electrons. This is SPDF. This is 1 2 3 shell number, X number of electrons. So higher N, electron is always removed from higher shell. Okay. So I will write configuration of iron. Iron is atomic number 26 and it is argon 4s2 3d6. So tell me what is the electronic configuration of Fe2+, and Fe
3 plus. Okay, write down the configuration. Just now I told you that when electron is removed, it is always removed from higher shell number. तो देखो ये 3D है, डोंट कंफ्यूज इन इट कि आप ऐसा लिख दो कि 2 इलेक्ट्रॉन हटाने हैं क्योंकि 2 प्लस है तो इसको आप 3D 4 कर दो, रॉन्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि हायर शेल नंबर से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 4s से निकल जाएगा तो इट बिकम्स 3D 6, और इसमें से 3 निकालने हैं, 2 तो s से निकल गए तो एक कहां से निकलेगा? 3D से, तो इट बिकम 4s, ये 3D 5 और ये 3D, ये Fe2 plus 3D 6, Fe3 plus 3D 5. So now tell me, out of Fe3 plus and Fe2 plus, which one is more stable? Fe3 plus is more stable. Fe3 plus is more stable than that of Fe2 plus, because Fe3 plus has exactly half filled D subshell. Very nice. Okay, great. Now tell me, what is the electronic configuration of Cl negative? Cl की मैं लिख देता हूं, Cl Z is 17, it is neon 3s2 3D 5. So what about Cl negative? Sorry, Z remains same, Z is 17 only, but Cl negative, 1 electron is added. So what is the electronic configuration of Cl negative? Great. So it is neon 3s2 and 3p 6. 3s2 3p 6, because 1 electron is added in the last shell, right? So in this way we can write the electronic configuration. Done? Okay, so one more, just write for chromium 3 plus. Chromium is Z24, it is argon 4s1 3D 5. So what is the electronic configuration of chromium 3 plus? Argon remains as such, 1 electron is removed from 4s and 2 more electrons are removed from 3D. So it becomes 3D 3. Right? Okay, very nice effort. Good. तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट। बस वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है 4s और 3D में कि इलेक्ट्रॉन पहले कहां से निकलेगा? 4s में से, हायर शेल नंबर से। ठीक है, ओके। अब हम करते हैं शेप्स, मच अवेटेड टॉपिक, शेप्स ऑफ s, p and d orbitals, subshells and orbitals. So start with s. S subshell. So for s subshell, L is 0 and M is also 0, means there is only one orientation. That means all directions are equivalent. M0 means same value, so all directions are equivalent. Means
L0 indicates S is spherical. S subshell is spherical in shape. Means for 1s, this is nucleus. Electron density is maximum near S, near the nucleus, and then it goes on decreasing. For 2s, there is one nucleus inside, there is one shell, and there is another. There are two spheres, one sphere and then next sphere, and there is a gap in between. This gap is void of electrons. There is no electron, and that is called spherical node or radial node. Spherical node or radial node. Node means the point or the place, the plane where the probability of finding the electron is nil. This is the spherical surface where the probability of finding the electron is 0. So that is called spherical node or radial node. So there is one radial node. For 3s, how many radial nodes are there? Tell me. For 1s, there is only one spherical surface. For 2s, there are two such surfaces. For 3s, yes, anybody? For 3s, 1s, 2s. For 3s, it is like 1, 2 and 3. One surface, second surface and third surface. So in between these surfaces there are two nodes, two spherical nodes, or we can say two radial nodes. Two spherical nodes or two radial nodes, right? And what are radial nodes? Formula is radial nodes is equal to, or spherical nodes, it is n minus l minus 1. This is the formula to calculate radial nodes. So you know 1s, for 1s n is 1, l is 0. So 1 minus 0 minus 1 means for s it is like n minus 1 only, because l is 0. So for 2s n is 2, l is 0. For 3s n is 3, l is 0. Got it? So मैंने आपको बताया था क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स, याद है? क्वांटाइज्ड स्टेट्स, एक स्टेट उसके बाद दूसरा स्टेट, सीढ़ियों का बात की थी, सीढ़ियों की, स्टेयरकेस की, कि एक बार पैर रख दिया तो दूसरे पैर जो है दूसरे स्टेयर पर रख सकते हैं, बीच में हम पैर नहीं रख सकते, वो ये सीढ़ियां हैं. इट इंडिकेट्स क्वांटाइज्ड नेचर ऑफ एनर्जी लेवल्स. ये क्वांटम लेवल की बात है, मैथमेटिक्स एक्चुअली. ये जो बना है ना, दिस इज द प्लॉट ऑफ साई स्क्वायर. यहां से ऐसे रखो, फिर साई स्क्वायर को प्लॉट करो 3D में. ये 3 एक्सिस होगी ना, मान लिया x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, फिर उनको प्लॉट किया है, तो साई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम आ गई यहां पे, फिर साई स्क्वायर की वैल्यू 0,
इतने गैप में देयर इज नो वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर, क्योंकि साई डिपेंड्स अपॉन एक्स वाई जेड लिखा था, साई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ठीक है ना। फिर साई स्क्वायर की वैल्यू यहां आई 0, फिर साई स्क्वायर की वैल्यू वापस आई और वो प्लॉट की हमने, क्या है वैल्यूज ऑफ साई स्क्वायर। तो अब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, मतलब साई की वैल्यू है ये, है ना, तो अगर मैं इसको 1s और 2s को जो ग्राफ दिए हुए बुक में वो प्लॉट करूं, तो देखो 1s जो है वो है लाइक दिस, maximum electron density near the nucleus, then it decreases, then it is almost very less. Okay, so if we plot the graph of psi versus r, so value of psi is maximum near the nucleus. This is the nucleus, this is the distance from the nucleus. As distance from the nucleus increases, value of psi decreases. साई की वैल्यू डिक्रीज कर दी, इट नेवर टचेस 0, बट ऐसा ग्राफ आएगा। तो ऑब्वियसली साई स्क्वायर का ग्राफ भी ऐसा ही आएगा, क्योंकि प्लस सी है ना। एक और पॉइंट, साई जो एक्स वाई जेड था, इट इज द, अगर मैं इसको रेडियल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करूं, रेडियल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, आर थीटा एंड फाई, समझाता हूं क्या होता है। तो एक होता है रेडियल वेव फंक्शन और एक होता है एंगुलर वेव फंक्शन। ये जो है दिस इज एंगुलर वेव फंक्शन and this is a radial wave function. Radial wave function depends upon r only, angular wave function depends upon theta and phi. तो यहां तो r से प्लॉट कर रहे हैं ना, तो ये एक किस्म का रेडियल वेव फंक्शन है, इसको r स्क्वायर लिखोगे तो भी चलेगा। समझाता हूं मैं, पहले ये समझ लो, साई की वैल्यू इज मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस, then as the distance from the nucleus increases, value of psi decreases, ठीक है। और psi स्क्वायर का मैंने सिग्निफिकेंस बताया था आपको, इट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और वी कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एट एनी पॉइंट, इट इज प्रोबेबिलिटी of finding the electron at a given point. अब दूसरा प्लॉट 2s, 2s जो है 2s में क्या है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई, देन नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड देन अगेन इट इंक्रीजेस, और इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज अ वेव, इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज अ वेव लाइक क्रस्ट एंड ड्रॉप। ये प्लस है ना, प्लस मीन्स क्रस्ट और माइनस मीन्स ट्रफ, वेव का क्रस्ट और ट्रफ, है ना। तो अगर कहीं भी 0 आ जाए तो साइन चेंज हो जाता है बेटा, इलेक्ट्रॉन वेव है ना, अगर कहीं 0 आ जाए तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। इसका मतलब अगर यहां मैं साई की वैल्यू प्लस लूं तो बीच में तो 0 आ गया, तो यहां वैल्यू क्या जाएगी साई की, नेगेटिव। तो if we plot a graph between psi
वर्सेस R, तो it is like this. First, it is near to nucleus, it is high, then it decreases, reaches 0, and then again increases. So it increases in the negative direction. Keep in mind. क्यों नेगेटिव डायरेक्शन में? क्योंकि 0 आने के बाद फिर बढ़ रही है, तो प्लस है तो दूसरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये इसको याद रखना। और अगर हम प्लॉट करते हैं साई स्क्वायर वर्सेस आर, तो देखो ये तो प्लॉट ऐसे रहेगा, यहां 0 होगा और फिर ये ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर हो गया ना, तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। साई की वैल्यू माइनस है तो साई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस। तो ये प्लॉट आएगा 2s के लिए। ये 1 है 2s का साई वर्सेस आर, ये 2s का साई स्क्वायर वर्सेस आर। 2p is dumbbell, L is 1 and value of m is -1, 0 and +1. So there are 3 directions. Shape is dumbbell, px, if dumbbell is in x direction, that is px. If dumbbell is in y direction, that is py. If dumbbell is in z direction, that is called pz. Okay, px, py, pz. So plus minus plus minus plus minus. If we take this as direction, this one, so it is plus minus. Okay, but generally we use the positive direction as this y, so it is plus, it is minus, right? So px, py, pz. If dumbbell is in x direction, it is called px. If dumbbell is in y direction, it is called py. If dumbbell is in z direction, it is called pz. For x, value of m is -1 or +1. For py, value of m is +1 or -1. If it is -1, it is +1, and if it is taken as +1, so it is -1. But value of pz, for pz, m value is taken as 0. Keep in mind. For z direction, value of m is taken as 0. Done? Now let us plot the graph. ये shapes समझ आ गई? डम्बल शेप है, डम्बल x डायरेक्शन में हो सकता है, डम्बल y डायरेक्शन में हो सकता है, डम्बल z डायरेक्शन में हो सकता है. So that is called px, py and pz. Right? Okay. Now this is the shape. Dumbbell है. This is the nucleus. So if we plot the graph of 2p versus means psi for 2p versus r, then at the nucleus electron density is 0. It increases and then decreases. It increases and then decreases. Increases then decreases. So it is like this for the 2p. So psi square, same graph, only for 2s it is different. But for 2p and 1s they are same because they are in the positive direction only. समझ गए? हाँ, अब एक और पॉइंट आता है, दैट इज द एंगुलर नोड, और उसको बोलते हैं एंगुलर नोड बोलते हैं
होते हैं नोडल प्लेन। तो एंगुलर नोड और नोडल प्लेन इज इक्वल टू एल, जो भी एल की वैल्यू होगी। इसका मतलब जो पी है उसमें कितने नोडल प्लेन आएंगे? 1। एस में नोडल प्लेन 0, एस में 0 और पी में 1। ये देखो न्यूक्लियस ऐसे लाइन पास करो आप, ये प्लेन है ना ये, तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? 0। बट अगर आप 2s तो स्फेरिकल है पूरा, तो कोई भी अगर प्लेन पास करोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो आएगी ना। नोडल प्लेन मीन द प्लेन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। कोई एक प्लेन जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0, ठीक है ना। तो एंगुलर नोड और नोडल प्लेन में जो वैल्यू है यहां पे देखो 0 होगी, तो डी के लिए कितनी होगी? 2। तो मैं लिख देता हूं, एक बार हटा दो, ये समझिए होंगे। ओके, तो देखो पहला मैं लिखता हूं कि जब एक क्वेश्चन आए, ये सीधा क्वेश्चन होता है, आपको ये शेप्स बनानी है ना। रेडियल नोड जो है, और क्या बोलते हैं उसको? स्फेरिकल नोड्स। रेडियल नोड्स और स्फेरिकल नोड्स दैट इज इक्वल टू n माइनस l माइनस 1, ये फॉर्मूला है। और एंगुलर नोड्स और नोडल प्लेन्स दैट इज इक्वल टू n। एंगुलर नोड और नोडल प्लेन्स के वैल्यू जो है उसके लिए l, रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड्स जो है दैट इज n माइनस l माइनस 1। गॉट इट? ये फॉर्मूलाज है, ठीक है ना। जैसे मैं लिखूं 1s 2p और 3d इवन 4f, इन सब के लिए जो रेडियल नोड होंगे कितने होंगे बता सकते हो? ऑब्वियसली 0, क्योंकि s स्टार्ट्स फ्रॉम 1, p स्टार्ट्स फ्रॉम 2, d स्टार्ट्स फ्रॉम 3, f स्टार्ट्स फ्रॉम 4। इसके लिए n कितना है? 1, l0। इसके लिए n2, l1। इसके लिए n3, l2। इसके लिए n4, l3। सही है। तो फर्स्ट में ये फॉर्मूला नोट कर लिया। तो नोडल प्लेन अलग अलग होंगे इनके, नोडल प्लेन्स और एंगुलर नोड्स। क्या होता है ये? L, तो इसका कितना होगा? 0, 1, 2, 3। ठीक है। स्फेरिकल नोड्स और रेडियल नोड्स, फॉर्मूला क्या है? n माइनस l माइनस 1। तो देखो 1 माइनस 0 माइनस 1, इसमें भी 0, दूसरे में 2 माइनस 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 2 माइनस 1 0, 4 माइनस 3 माइनस 1 0। सो रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड इन सब में क्या होगा? 0। और एंगुलर नोड और नोडल प्लेन तो सिंपली L होता है। That's it. I think you should understand all these things. Today's homework, just calculate angular nodes and radial nodes for 5G, 3P
4d एंड 5s, इनके लिए आप फाइंड आउट करोगे इन सब की n की वैल्यू, l की वैल्यू, m की वैल्यू और s की वैल्यू फॉर ऑल दीज सबशेल्स। किसी को डाउट नहीं है ना?